एक बहुत बड़ी दिल में चाहत उठी पिछले साल और इस डायरेक्शन में हमने और मेरे टीम ने सही में काम शुरू किया और इस सोच से कि हर सीमा पार हो जाए, क्योंकि भारत में जो डेटा एनालिटिक्स है, और ज़रूर मैं बाज़ार के बारे में भी बात करूंगा, वही तो मेरा प्राइमरी काम है। मैं आपको बाज़ार के बारे में नहीं बताऊंगा तो ये इंटरेक्शन ख़त्म भी नहीं हो सकता है। परंतु मैंने सोचा कि आज आपको स्ट्राइक के बारे में थोड़ा कुछ बताया जाए, क्योंकि इसी का एक्साइटमेंट आपको दिख रहा है मेरे चेहरे पे और मेरे कुछ छोटे मोटे जो मैंने वीडियोस पिछले 2 दिन में डाले हैं उनका। और ये बीटा वर्जन में है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ लिमिटेड रिलीज या अनाउंसमेंट किया 1-2 बार, ताकि कुछ लोग इसका इस्तेमाल करना शुरू करें और कुछ फीडबैक मिले और कुछ हम लोग करेक्शंस कर लें, ताकि लाइव एनवायरनमेंट में जब सब लोग इस्तेमाल करेंगे तो तकलीफ कम हो। तो ये हफ्ता इस काम में जा रहा है और संडे या मंडे से हम लोग इसको फिर हर दिन अनाउंस करेंगे, ताकि सब लोग जान पाएं और सब लोग इसका इस्तेमाल कर पाएं। अगर ये यूट्यूब वीडियो है वो आपको बाजार के अलावा मैं 2 मिनट इसके बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा कि स्ट्राइक इज इन आर बिलीफ वन ऑफ द बेस्ट एंड यूनिक, मतलब ऐसा कुछ है ही नहीं बाजार में इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, जो कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है मार्केट में, पोजीशंस क्या हैं, आज क्या हैं, पहले क्या थे, कंपैरिजन कर पाना, एक चार्ट पे देख पाना और समझ पाना कि ये इसका क्या मतलब है, ये जो पहले लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि किसी के पास सिंगुलर डेटा नहीं है। मेरे पास कुछ ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं 20 साल से एक्सेल शीट पे मेंटेन कर रहा था, उनको हमने पब्लिक कर दिया इधर। और फिर कई दूसरी चीज़ें जो पता हैं हमारे पास आती हैं, कई साइट्स पे मिलती हैं, परंतु इस तरह नहीं मिलती हैं कि आप उसको देख के समझ पाएँ कि इसके जो नंबर्स हैं जो आ रहे हैं ये सही हैं, गलत हैं, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए, वो चीज़ हमें सही सही सामने बता दे सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर ये काम कर सकता है, अगर आप थोड़े बहुत कोडिंग करते हैं और अकलमंदी से करें तो ये काम हो सकता है। और इसी डायरेक्शन में हमने काम शुरू किया, 9 महीनों का काम, कई पैसे लगा के कई डेवलपर्स को साथ में लेके इस चीज़ को किया है। और पिछले अगले 1 महीने में, इवन आफ्टर वी रिलीज इट, you will see new and new updates every week that will completely blow your mind. So be prepared, and so if you're an individual investor, trader, advisor, कोई भी हो, एनालिस्ट हैं आप, तो आपको इस इंफॉर्मेशन और डेटा की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, and at the right price point, which means the best tool and software being available at a price that is unbelievable. It's not going to cost you $1,000 a month. It is going to or $2,000 a month, like some of such tools are costing. मगर आपके पास आएगा ये बहुत ही कम भाव में। मैं भाव ही नहीं बताऊंगा, आपको पता ही चल जाएगा वेबसाइट और टूल देखते हुए, क्योंकि इनिशियल पीरियड में हम लोग इसको कुछ टाइम तक फ्री रखेंगे ताकि आप इस्तेमाल कर पाएं, दूसरों को दिखा पाएं, दोस्तों को बता पाएं, एंड एवरीबडी कम्स टू नो अबाउट व्हाट वी हैव इन स्टोर फॉर यू. सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू बी. So look forward to it this Sunday, Monday, something that we've put our heart into. तो ये हुई स्ट्राइक की बातें. So that's the excitement, and the team is working day and night so that it becomes possible and you get the best of it, best of the world that you're going to see. That is the promise. We have already looked at it. Some people have already reviewed it on Twitter, and so what the quality is going to be. And what you're seeing right now on the version is still maybe only 20-30% of where it's going to be at the end. So imagine that's our thought process. And with that, let's get into the markets. The markets have been on wildfire, especially when it comes to stocks. Stocks have been raging and moving up consistently on a day-to-day basis. But I have a short-term concern, apart from being long-term bullish from the bottom in March, something that I've reiterated, and you have seen in a lot of my recent articles on money control. The short-term, I'm getting to a point of concern where the market is continuously running, and somewhere it needs to pause. Especially when we look at कि mid-cap indices जो हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं. जो मिड कैप RSI है वो ऑलमोस्ट 86-87 तक पहुंच गया. इट्स अ वेरी वेरी ओवरबॉट रीडिंग. इसका ये मतलब नहीं है कि 2-4 दिन और नहीं भाग सकता, क्योंकि रुक तो रहा नहीं है, बट जहाँ पे भी रुकेगा एक नीजर्क रिएक्शन आने की ज़रूरत है, जिससे कि ये जो एक्सट्रीम ओवरबॉट सिचुएशन है निकल जाए.
and then it will be easier to then drive the next move higher from there. So ऐसे एक point पे हम लोग जरूर आ रहे हैं, but we didn't get that reaction last 2 दिनों में. मैंने सोचा कि शायद ऐसा reaction आएगा. Today it recovered most of those losses, and maybe it will again make one more new high. That's also looking possible. But over the next few days, I will remain on toes, looking out for the possibility that a near-term correction sets in course, because buying a running away market after a point of time becomes hard. एक point तक तो हम भी चढ़े रहते हैं, देखते रहते हैं, मैं बोलता रहता हूँ कि यहाँ चलेगा, but एक point के बाद लगता है कि नहीं, बस अभी शायद we should pause or sit back or hold our nerves for a while. अच्छा, strong bull market में this thought doesn't work though. If I look at the 2003 first rally from the bottom, it lasted for almost 3 months and it kept on going a long way. रुका ही नहीं. तो हर लेवल पे अगर हम सोचते कि अभी रुकेगा, not necessary. So this thought comes up. We want to believe that this is a normal market, but it is a normal market if it even stretches, right? So that is why when you expect that there can be a dip in the market, it is only a expectation of getting a better opportunity, better entry, both as an investor and a trader. For an investor to deploy fresh capital, and for a trader to be able to take a new position if he's booked out. But in this runaway situation, definitely for traders it is very very tough, क्योंकि आप कहीं पे ऐसे मूव में फंस गए तो नुकसान भी ज़्यादा हो जाता है. इन्वेस्टर के लिए बहुत वेज है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, अगर शॉर्ट टर्म में हिट लेता है तो भी प्रॉब्लम उसको शायद ज़्यादा नहीं लगे. परंतु मैं इतना बता दूं कि इन टॉप डाउन अप्रोच, समथिंग दैट हम लोग सिखाते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में, मैं निफ्टी को पहले देखता हूं, क्योंकि निफ्टी से हम लोग को एक व्यू मिलता है, डायरेक्शन मिलता है, और निफ्टी के डायरेक्शन से फिर हम लोग जब स्टॉक के बारे में सोचते हैं तो व्हाट हैपेंस इज दैट इफ द निफ्टी इज लुकिंग करेक्टिव, जो अच्छे सेटअप्स दिख रहे हैं, आजकल में भी दिख रहे हैं, कुछ देख के ऐसे लगता है अच्छा ये तो नया मूव शुरू कर रहा है, वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट जब गिरता है तो इट अफेक्ट्स एवरीथिंग. सो द बेस्ट सेटअप्स टेंड टू फेल, एंड दैट इज व्हाई टॉप डाउन अप्रोच वी फर्स्ट गिव द इंडेक्स एंड द सेटअप more importance than what is happening at a stock level. That doesn't mean that certain stocks cannot outperform against the index, but in general I have found that कई बार हम लोग जब carried away हो जाते हैं तो market correction हम लोग को खा जाता है basically. तो stock specific में ये चीज़ को सोचना पड़ता है. इसलिए even though we see stock specific setups that are good, sometimes it is worth acting, especially when a trend is down in the late stages. Some stocks bottom out early. We do pay attention and we do give importance to a setup irrespective of market. But sometimes in the short term when you reach a point जहाँ पे ऐसा लगता है कि शायद बाजार में एक पुल बैक या कुछ हो सकता है और उस टाइम पे ऐसे सेटअप्स बन रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म में वी ट्राई टू इग्नोर दैट, क्योंकि इट कैन गो रॉन्ग. एंड एज एन इन्वेस्टर इट्स ओके. आई मीन या तो थोड़ा नीचे लेने को मिलेगा या नहीं लेने को मिलेगा, या फिर बाद में ऊपर में थोड़ा ले लेंगे. बट एंड ट्रेडर्स तो फंसते कि जैसे मैंने बताया चांस रहता ही है व्हेन यू ट्राई टू ट्रेड अगेंस्ट व्हाट द मार्केट इज रियली showing you in terms of direction. So I think that's the thought process right now in my mind. Even after today's recovery, I feel that I'll wait for a few days, see where it peaks, and then see it roll over. Now, that doesn't concern me as an investor, which means if I have an investment portfolio, I'm not going to sell anything, because this is a correction in a bull market, right? So if it was the end of a bull market, when we say top, then that's a different scenario. When we are saying correction in a bull market, you don't really sell long-term investments. You only look कि हाँ additional cash है, मुझे deploy करना है, थोड़ा रुक जाऊँ क्या? That is the only question which comes to mind. Now in this scenario, so basically I think it's the mid-cap index that is giving a bigger scare, क्योंकि उसका RSI जैसे मैंने बोला 87 तक पहुँच गया है, and those individual stocks have been going up every day. So that's the place of concern. And apart from that, otherwise individual sectors sometimes in rotation. अभी हमने banking में देखा, bank nifty has already seen a correction over the last week or two, so it did its own thing irrespective of nifty. Now will the market continue to extend in that format, without really pausing and letting each sector do its own thing? It is a possibility. We can't rule it out, but I just find it right now hard to say surely which thing is happening, this one or that one, and so therefore watching for clear signs. Now one of the concerns that would be around, and in fact if we look at US markets, okay, that's the place where most of the concerns come from, that's actually turned from weakness to strength. उधर का जो माहौल है वो बहुत ही अलग है.
इनफैक्ट वहाँ पे हमने मिड कैप और स्मॉल कैप्स में तो पार्टिसिपेशन देखा ही नहीं है. तो राइट नाउ यू आर बिगिनिंग टू सी द फर्स्ट राउंड ऑफ बाइंग इन दोज सेक्टर्स विच वर नॉट पार्टिसिपेटिंग. तो अभी तक क्या यूएस का बाजार था, लोग कह रहे थे कि ये 5 स्टॉक ही चला रहा है. एआई रिलेटेड जो स्टॉक्स थे या जो पहले फैंग थे उनको एआई बना दिया, क्योंकि टेक की कंपनियां थी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम तो टेक की कंपनियां ही करेंगी, तो उनका नाम जो है एआई से जुड़ गया और उस पर भाव और भी भाग गए. एंड इट वॉज नॉट विदाउट रीजन, बिकॉज एनवीडिया एक्चुअली रिपोर्टेड नंबर्स which were overshooting expectations because of the demand for AI chips. And so therefore, and they are already projecting much more in the quarters ahead. So that sort of created that bubbly movement. But what it has also done is post the US debt ceiling, vote, to increase it. The negativity which was there in two parts of the US market. One was in the small caps, which if you see the Russell 2000, रसेल 2000 जो है इंडेक्स स्मॉल कैप्स का, वो कई बार एक ही जगह पे बार बार बॉटम बना के ठहर रहा था. एंड देन सो इट वाज लुकिंग लाइक विल इट ब्रेक दैट लेवल और विल इट होल्ड दैट लेवल. बट मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद भी वो लेवल टूट नहीं रहा और वापस भाव ऊपर की तरफ आ रहे हैं. सो यू आर स्टार्टिंग टू सी स्लाइटली ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट ऑन द अपसाइड. अगर ये ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू रहता है, अभी इट्स अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, it looks like it will continue. That is my forecast, but you can watch out. And if it does, then we are actually seeing strength return to the broad market in the US, which was missing. The other place within it was the banking sector, right? जहाँ पे क्राइसिस था, तो मार्च के लो तक गिरा हुआ था, उसके बाद भी बाउंस होके वापस गिरा. I think it made one more new low, and then from there it was trying to recover, and that recovery is now slightly more clearly visible. I can see 5-wave impulsive rallies in the banking index, and so I have presumed that the bottom is done for the US bank index. तो यूएस के जो बैंकिंग शेयर है वो भी पार्टिसिपेट अगर करने लग जाएंगे, स्मॉल कैप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यू हैव अ ब्रॉड बेस्ड यूएस रैली विच वाज रियली मिसिंग, अनलाइक इंडिया वेयर द मिड कैप इंडेक्स आरएसआई इज 87, यूएस में इट इज एट द बॉटम. सो यू डोंट हैव द सेम काइंड ऑफ ओवरबॉट रीडिंग्स इन द यूएस राइट नाउ. इनफैक्ट यूएस इज स्टिल सीइंग शॉर्ट कवरिंग, जबकि शॉर्ट कवरिंग हमारे यहाँ इंडिया में ऑलरेडी हो चुका है. एफआई का जो हाईएस्ट एवर शॉर्ट पोजिशन मार्च के महीने तक बन गया था इंडेक्स फ्यूचर्स में, वो पूरा कट चुका है. अभी इट्स नियर जीरो. सो डीआईआई भी नियर जीरो है और ये सब डेटा भी आपको स्ट्राइक पे दिख जाएगा. तो स्ट्राइक पे आप देखोगे तो डीआई का पोजीशन भी जो लॉन्ग था वो जीरो तक आ गया है, एफआई का भी लॉन्ग से जीरो तक आ गया है. सिर्फ क्लाइंट साइड का पोजीशन है जो कि थोड़ा शॉर्ट साइड पे बिल्ट हुआ है कंपेयर टू मेनी प्रीवियस टॉप्स. इट इज एट अ सिमिलर लेवल. तो वो भी एक इंडिकेशन है कि शायद नियर टर्म में क्या टॉप बन सकता है. बट यू वांट सम काइंड ऑफ अ कंफर्मेशन from the Nifty itself that it breaks a trend line, breaks an average, or today's trading, after I'm recording, after today's day, which is the 20th of June, the Nifty did take support on a trend line level. In fact, it came close to the 20-day average also, and both did not break. तो ये levels टूटे नहीं, और ये levels के ना टूटते हुए it's still a sign that the trend has not reversed, despite what we are seeing is loss of momentum or मिड कैप्स गेटिंग ओवरबॉट, बट रिवर्सल का साइन नहीं आया. तो ये बट यूएस में तो ओवरबॉट ही नहीं है, तो देयर इज नो केस फॉर अ मेजर रिवर्सल. तो दिस इज द डिस्पैरिटी दोनों मार्केट्स में, दैट स्लाइटली डिफरेंट सिचुएशन इन इंडिया वर्सेस द यूएस. यूएस में पार्टिसिपेशन इज जस्ट स्टार्टिंग टू गेट वाइड, और उसके जो मेन इंडाइसेस हैं उनके ठीक है आरएसआई 70 के ऊपर आ गया होगा एसएनपी का, बट इट इज नॉट लाइक 80+ एंड इट्स नॉट इन अ क्रेजी जोन. Although you have a short-term indicator of sentiment like the daily sentiment index, which is issued by Trade Futures, showing more than 90% people bullish on the Nasdaq and S&P. Okay, so that's again now, should we read that as a major concern, major top concern, or a short-term one? Because sometimes short-term also you get extreme sentiment data, market थोड़ा cool off हो जाता है, फिर से new highs लग जाते हैं. So so when will I give that sentiment data maximum importance for a long-term top or bottom is when my Elliott wave analysis for the larger picture shows कि something is completing. That also is not true. So US and global markets I think still have upside, though in the short term because of some of these sentiment extremes we can see a reversal. But simultaneously we also seeing a reversal. We have to see a reversal at some point of time in bond yields. And when bond yields start to drop, unlike general expectations, I am thinking that it would be supportive of equities. We've seen that a couple of times recently.
We saw that after the inflationary period of the 1970s and 80s, after 1984, as rates started to come down from peak, equities also went up eventually. And I think we are getting closer to that point. But just that US bond yields, जो US के इंटरेस्ट रेट का दर है, बॉन्ड यील्ड्स के हिसाब से ज़्यादा नीचे अभी तक नहीं आया है. आज गिर रहा है इंट्राडे, बट वी विल हैव टू सी कि फॉलो अप आता है कि नहीं. क्योंकि भारत में तो इट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. भारत में जो ट्राइंगल बना था उसके नीचे टूट के निकल गया. बॉन्ड यील्ड 7.75 7.8% से नीचे अभी 7% तक तो आ गया है, और मेरा सेंस है इससे भी काफ़ी नीचे जाएगा. यूएस में वैसा ब्रेकडाउन नहीं है. यूएस हैज़ अ फॉलिंग चैनल. लोअर हाइज आर देयर फॉर बॉन्ड यील्ड्स, बट इट हैज़ स्टिल नॉट ब्रोकन द लोअर एंड ऑफ द रेंज, and that is why it is not clearly showing a sign that we are heading into what do you say, a lower end. I mean, I think we are headed into a lower interest rate regime, but we are not getting that confirmation, a very clear confirmation that interest rates are breaking down for the US. But the lower highs are indicative of a potential reversal. But क्या है कि sharply rates जब कम होंगे तभी बाजार उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और तभी डॉलर भी ज़्यादा गिरेगा. और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि कोर इन्फ्लेशन से, इवन दो इन्फ्लेशन का सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा तो घटा है यूएस में, बट जो कोर इन्फ्लेशन का डेटा है वो इतना नहीं घटा है. परंतु खुद जेरेमी पावेल ने भी इसको एक्सेप्ट किया कि जो उसका डेटा है वो थोड़ा लैग हो रहा है, बिकॉज इफ यू लुक एट रेंट्स इन द मार्केट दे हैव कम डाउन, एंड इवेंचुअली दैट शुड रिफ्लेक्ट इन द कोर इन्फ्लेशन. जो शेल्टर इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको, शेल्टर इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो इवेंचुअली गवर्नमेंट डेटा मार्केट के डेटा से मैच करेगा तो वो डेटा भी कम आएगा, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस बॉन्ड यील्ड्स विल स्टार्ट कमिंग डाउन. सो आई डोंट थिंक द यूएस इज गोइंग टू रेज रेट्स. जो ये एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि फेड ने टेबल पे छोड़ दिया है कि भाई फेड मेंबर्स बोल रहे हैं कि शायद 2 बार और हाइक करना पड़े, बट ये चीज़ उन्होंने बोल के रखी है ताकि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस ना बढ़ जाएं. जो एक्सपेक्टेशंस लोग के रहते हैं इन्फ्लेशन को रेट को लेके, वो ना बढ़ जाए, क्योंकि फिर दैट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन इटसेल्फ. बिकॉज आप अगर एक्सपेक्ट करोगे कि भाव बढ़ने वाले हैं तो फिर आप अपने भाव भी बढ़ाओगे. तो उस एक्सपेक्टेशन को कम रखने के लिए दे आर कंटिन्यूसली सेइंग कि हम रेट बढ़ा सकते हैं. बट एक बार डेटा आने लगा फर्दर नीचे की तरफ, तो आई डोंट थिंक दे विल बी एबल टू कंटिन्यू टू यूज दैट कमेंट्री कि हमें रेट बढ़ाना है, अभी भी बढ़ाना है. I don't think बढ़ाने की जगह ही रहेगी. So I think that they are done with the rate hikes. This is the pause before they start cutting. The only question is when will they cut? When will the data change? 1 क्वार्टर लगेगा या 2 क्वार्टर लगेंगे? क्योंकि CPI डेटा तो गिर ही रहा है. US में everything, Europe also जहाँ पे this data point was sticky, you will start seeing European inflation also start to cool off. And this should end what we are calling as central bank divergent policies. एंड दिस बीन ट्रू. आई मीन अभी नहीं, पिछले साल भी डाइवर्जेंट थे. जब यूएस रेट्स बढ़ाने की बात कर रहा था तो यूरोप वाज नॉट रेजिंग रेट्स, इट वाज स्टिल डूइंग क्यूई. सो नाउ वी हैव अ सिमिलर सिचुएशन. यूरोप इज रेजिंग रेट्स, बट इट इज रेजिंग रेट्स सो स्लोली कि इन्फ्लेशन 10% के ऊपर भाग रहा है और आपका रेट वहीं 3-4% पे ही है अभी भी. ओके, 3 तक या 3 तक ही पहुंच पाया. यूएस 4-5 तक पहुंच गया है. और अब यूरोप का इन्फ्लेशन डेटा अगर घटने लगेगा तो क्या आप फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओगे ही नहीं. So by keeping real interest rates largely negative, you are actually indirectly stimulating the market. And that is why European markets are much higher than US right now, close to the all-time highs in some cases. So that explains it, and that also explains the same thing for Japan, जो कि अभी भी बॉन्ड बाइंग कर रहा है, कह रहा है नहीं हमें बंद करने की ज़रूरत नहीं है. और चाइना जिसका रीओपनिंग हुआ, इन्होंने रीओपनिंग करके they were not as aggressive on stimulus like the US when they reopened, and like India also was not that aggressive. We were okay. US was the most aggressive along with Europe. So they have seen much more inflation. China ने बोला नहीं हम इतना पागल नहीं होंगे, तो they went slow. But slow में क्या हुआ कि the economy after COVID came off and started to cool off, and now they are cutting rates to stimulate. So they are doing it slowly so that they don't have to deal with the inflation problem that the rest of the world had to deal with. But the main point is that you have multiple central banks easing policy. And there was a tweet by Ritesh on my cross-border capital chart. Basically, there's a cross-border capital has a liquidity indicator of its own, which they have been saying that the liquidity cycle has bottomed. And this at a time when a lot of people were thinking कि ये TGA account और ये account सब लेके, क्योंकि डेट सीलिंग बढ़ रहा है तो उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, जब बोरो करेंगे तो फिर पैसा इकोनॉमी से निकल जाएगा. अब वो सब होने के पहले ही the Fed is already expanded
the monetary base. Okay, so how they have done it, I have not studied, but Ritesh Jain ने एक chart डाला Twitter पे on top of the chart I posted, and he showed that the near term data is showing an expansion in liquidity happening in US. So this is where I say that so you cannot really predict what the Fed will do. हम लोग बैठ के सोच सकते हैं अरे उनको borrow करना है क्या करेंगे. Fed will provide the liquidity when and where and how कि it doesn't become a crisis. And that is where then if we just keep predicting crisis, then it doesn't end up happening. So you have to really monitor what is happening below the below the surface, and at the same time what the markets are telling us. क्योंकि बाजार तो सब जानता है ना, तो बाजार अगर जानता है कि थिंग की तकलीफ आने वाली है तो पहले ही गिरने लगेगा. अगर 12,000 पहले से ही बढ़ रहा है तो it is telling us something is changing, and that is what it has been doing for the last 2 months when it comes to US equities. They were rising slowly and steadily. People were not accepting that you have such a situation, which is why you have had one of the largest short positions in the S&P futures up until 2 weeks ago, and then after the debt ceiling, 90,000 contracts got short covered, another 15,000 last week, and we are still a long way to go because we have almost 330,000 contracts short still open in the market after having hit that all-time record. तो ये है ओवरऑल सिचुएशन. यूएस के बाजार में शॉर्ट कवरिंग काफ़ी बाकी है, इंडिया में काफ़ी हो चुकी है. तो न्यूट्रल पोजीशन है, एफआईएस भी 0 पे है, डीआई भी 0 पे है. तो दे आर ट्राइंग टू थिंक व्हाट इज द स्ट्रेटजी गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट टू डू नेक्स्ट. एंड इन द मीन टाइम आई थिंक इट्स अ गुड टाइम to sit back and wait and hope that maybe the markets give you a decent pullback and you are able to get a better entry point both as traders and investors. So this is my roundup on the market, and let me just announce once more, strike is coming. It's there, it's already live, we are testing. If you've seen the links, you're probably using it, but we will announce it and send out a lot more material, a lot of videos for people who want to learn how to use it. जिन्होंने कभी इस डेटा को इस्तेमाल नहीं किया है वो भी सीख पाएंगे. Every retail investor will be able to get access. So this is not only for insiders, this is for everybody. तो जिसको भी चाहिए, and you will get an initial free period, so you will be able to see कि क्या है इसमें, कैसे कर रहे हैं, और उस पर कंटिन्यूसली हम लोग वीडियोस बना के लोगों को सिखाते भी रहेंगे और बताते भी रहेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स हम आज के तारीख में देख रहे हैं. तो आपको भी समझ में आएगा कि किस चीज़ को कैसे देखना है. एंड ऑल दैट विल बी देयर ऑन दी डेस्कटॉप वर्जन of the software, जो कि both web and downloadable रहेगा eventually, and I like downloadable versions because you can actually have it on your setup, not worrying about whether the browser is getting heavy, and so that's something I'm really looking forward to. But the web version is out, and that is working perfectly, so all the data is there. So that's it from me, and I've done with my announcements, and I am really enjoying this. Back to strike.